سمجھ گیا, چیف جسٹس کہہ دیا, وہ تو چیف ٹھیک جسٹس ہے, گاٹ offended, وہ تو میں سمجھ گیا, بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا آئے گا. مگر میں دوسرا پہلو, وہ تو بات لیکن سمجھ گئے. اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا, اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اور دوسرا کہتا ہے میں offended ہوں. offended ہوں, اور اگر ہوا تو میں آپ کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں جب جج کا ملزم کے ساتھ پرسنل گرج ہو جائے اور جج اس کو چاہے کہ سزا ملنی چاہیے تو کیا وہ جج رہے گا؟ یہ ہے میرا پوائنٹ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, اگر آپ پیج 50 پہ آ جائیں, ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ایسے. چلو اگر آپ پیج 50 پہ دیکھیں, سائن سب کر رہے ہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں نا. نہیں, اگر اوپر دیکھیے, the acting chief justice directed, he doesn't say the court directed. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ بات پتہ نہیں, اب یہ بھی میں تو نہیں, مطلب if it's a collective court then you write unless there's a dissent or something. صاحب اس کو تھوڑا الاؤنس دیجئے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انگریزی میں ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب وہ تو چلے, اس کو اتنا امپورٹنس. PW کون سا نمبر تھا؟ 31. آپ کنسرن کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کی 30 انگریزی بہتر ہے؟ 31. اچھا چلے, اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سر, پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویری کنفیوز. جی چلیں, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باعث دکھا رہے ہیں. یہ باعث ہے غصہ کر گیا اس کو, مطلب جو آپس میں ان کی یہ ہر آپ اس کو ایکیوز بنا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف پرچہ کروانا, یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کمپلیننٹ بن گئے, کمپلیننٹ بن گئے نئے کیس کے لیے. اور جج یہ کمپلیننٹ بن جائے تو کیا پھر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اس ٹرائل میں؟ کوشچن یہ ہے. اور کیا باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر سائن کیا؟ یہ پوائنٹ ہے. یہ جو باعث میلس ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام سے رپورٹ درج کراؤ, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا, اگر مجھے کچھ ہو گیا, اس کا مطلب میں دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو پکڑ لینا. یہ 107 اور 151 کی کاروائی کرنا چاہتا ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے, اس میں دونوں اس نے کٹھے. کہا کہ اپریہنشن کر دی کہ یہ مجھے مروا دے گا, میرے کو انیمیکل ہو گیا نا. تو سر آپ کا اس کا مطلب ہے جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ملے, میری خواہش ہے اس کو سزا ملے کسی اور کیس میں, تو اگر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کی فیٹ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے ملک صاحب کہ جو اگر ملزم نے کوئی بات کر بھی دی وہ تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے اس آرڈر میں, یا تو پھر اس کو پھر بیان بنائیں. نہیں, پہلے تو آپ نے کہا At this accused let it go to a remark. یہ سٹارٹ چیف صاحب نے لیا, ٹانٹ انہوں نے کی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی. یہ وہ کس کو سنا رہے تھے؟ یہ بات وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہاں کون تھا جو باری لا رہا تھا؟ یہ باری تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو اب جیسے آپ مجھے کچھ کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں تو آپ کہیں ہاں جی آپ نے تو کنٹیمپٹ کر لیا, بس ٹھیک ہے, ہم نے جو کہا وہ چھوڑ دیں. آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف کی باری نہیں آئی. What do you mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. وہ آگے سے اس نے کہا آئے گا, اب کہہ دیا ہوگا, اب اس کے اوپر پورا آرڈر لکھوانا کہ اسکواٹ والے کو کہو کہ تھانے جاؤ, رپورٹ درج کراؤ, تاکہ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کل کو. ملک صاحب ہوا کہ ویسے آرڈر کر دیا تھا کیا جی؟ یہ رپورٹ کر دی تھی جج صاحب نے. جی وہ آرڈر میں لکھی ہے چیف جسٹس, آپ ابھی آرڈر پاس کریں کہ بھی ان کو لے جاؤں تو یہ تو لے جائیں گے مجھے. یہ پوچھنے اس میں کوئی دوسرا جو رائے نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. میری وجہ سے کبھی نہیں ہوتا ایسی بات. نہیں چلے, میں تو ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں. ابھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے, آپ تو خود چیف جسٹس رہی ہیں. اب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کاروائی کرو. Who will dare? And in that time, at that time when there is a marshal, has not been brought on the record کہ واقعی ہو گیا تھا. نہیں, وہ تو obviously ہو گیا ہوگا, وہ اس کی جرت ہے, وہ جو بیچارہ سب انسپیکٹر ہے کہ وہ کمپلائی نہ کرے. آپ اس میں بات نوٹ کریں نا کہ کتنا پرسنل میرے اندر وینم ہے. یعنی اس کو آگے بڑھتے ہیں, وہ ہو یا نہ ہو, لیکن آرڈر سے پرسنل گرج سامنے نظر آ رہی, ثابت ہے, بس اسٹیبلش ہے, what you are saying. نظر نہیں آ رہا, اسٹیبلش ہو گیا. اس کو آپ اس اینگل سے بھی دے سکتے ہیں ملک صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا تو پرچہ کرا دیں, بالکل پرچہ. تو یہ اس پہ بن سکتے تھے کیس 100% بن سکتا. 100%. چلیں پہلی ہو گئی اس کو ہمارا بات. لیکن افسوس یہ کہ پائلٹ کہتے ہیں 5 سے پہلے ہو گئے موقع جی آگے کیا. اچھا سر, اب میں اگر اس اسٹیج پہ آپ کو وہ ٹریبیونل کی بات بتا دوں,
जिसमें वो कसूरी साहब का स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल ने रेफर किया है, ये so I am not addressing you, please. नहीं आप हमें बताएं ना, आप कोर्ट से बात कीजिए, मैं ठीक है, रिकॉर्ड आप हमसे बात करें, कसूरी तहम्मुल रखिए। I have nothing personal against you, Kusuri Saab. You are respectable for me. I am referring the record. I don't think. मतलब हमें मुखालिफ सर करें। मगर अच्छा नहीं लगता नहीं ना। अब क्या करें, बुजुर्ग हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, आपको नहीं सुने हम क्या। पहले ये बता दें ट्रिब्यूनल बना कैसे और क्या हुआ। सर अब मैं पहले एक तरफ से फारग हो जाऊं तो फिर बता देता हूँ। ये ट्रिब्यूनल को रेफर करें। ट्रिब्यूनल सर इस तरह बना कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया अंडर द ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत। वन मैन ट्रिब्यूनल था, ये नोटिफाइड हुआ इन गैजेट ऑफ पंजाब ऑन 11th of December 1974। इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है, उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके, अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता नहीं, हूं। वो मैंने पढ़ ली है पूरी रिपोर्ट, रिकॉर्ड का हिस्सा है। रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसका पेज कौन सा है? 14 पे सर, जिसमें ये लिखा है, ये है पेज 14 है इसका। वो कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं सर, एक ही इतनी सी रिपोर्ट है। क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर पर्सन्स हु मे बी इन्वॉल्व, कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे सर नहीं, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है। आप वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा। मैंने देखी हुई, क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं? सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इजाजत दे। इसको पढ़ लेना। जी पढ़ें जी प्लीज, मैं पढ़ देता हूँ, चलें आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। कौन से ये सर पेज 14 पैरा 15। कॉपी भी है, कॉपी है या नहीं हमारे पास? और ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने। है किसमें? मैं सर बताता हूँ। ये पढ़ी, ये है ओरिजिनल तो हमारे पास है, पता नहीं कॉपीज बनी है या इसमें नहीं। कौन सा पेज? आप ऐसा करें, आप पढ़ लें, हमारे पास ओरिजिनल है, हम कॉपीज कर लेंगे बाद में। आप पेज बता। 22 February इसके 1975। ऊपर पेज पेंसिल से लिखा हुआ है। सर जी वही टाइप पेज है ना जी, ये 14 है, टाइप पेज 14 उसके नीचे पार्ट 2 लिखा हुआ है। रिपोर्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल नहीं, इसमें तो हमारे पास नहीं है जी। पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ 15 सर। ये जो अब ये देखें, ओनली मोटिव वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई और आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्रिब्यूनल ने जी, उसने तो आगे जाके उनको गाइडेंस दी है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन। एडिशनल फैक्ट फाइंडिंग मशीन है। हाँ उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। Why should there be a tribunal? वो मैं उस पे तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें जो कि इस केस के लिए बड़ी जरूरी है, वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, नॉट बाय दीज ट्राइब्यूनल। बिल्कुल, आई एम विद यू सर, कि कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्राइब्यूनल बनाने की। वो तो एलिगेशन है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें, बिल्कुल ठीक, मगर एक सर्कमस्टांस आ गया ना उसमें, मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक ऑर्डर। आई थिंक अगर हम उसका सिनारियो देखें, एट दैट पॉइंट इन टाइम Mr. Bhutto was the Prime Minister and allegations were being made, so probably to raise the stakes or whatever you want to call it, a judge of the High Court was constituted as a tribunal कि कहीं ये देखें पुलिस तो नहीं करेगी सही इन्वेस्टिगेशन, तो शायद ये वजह हो सकती है और मेरे ख्याल में यही वजह होगी। मलिक साहब, इस तरह के ट्राइब्यूनल बने, जब आप इशू को पार करना चाहें तो फिर ऐसे ट्राइब्यूनल होते हैं, सच दोनों तरफ जाती है ना बात, बट द पॉइंट ऑफ माय लॉर्ड यहिया अफरीदी इज वेरी रेलेवेंट, बिकॉज इन क्रिमिनल केस इट इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन। मगर बन गया ना, बन गया, मैं तो इसलिए रेफर कर रहा हूँ ना। जी बताएं फिर। पढ़ेगा इन explaining the mention of motive in the FIR, अब ये आगे बड़ा जरूरी है। The complainant made it clear, and who is the complainant? Made it clear
that it does not necessarily mean that he was subjected to this and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister, or that the attack was organized by someone in government or party. He said, on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister, who happened to be, for the time being, the repository and source of all political and governmental power, could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene. अब ये वो जो बात है कि वो उनका नाम आया तो क्या वही थे. अब वो ट्रिब्यूनल रेफर कर रहा है उनकी स्टेटमेंट को. दिस इज हिज केस, ही डिड नॉट अपीयर. आई डोंट नो वेदर ही अपीयर और नॉट, बट दिस इज इन द रिपोर्ट. वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट बताई है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो हों, कोई उनकी बातें सुन के शायद किसी और ने भी कर दिया हो. ये मैं पढ़ना चाहता. ठीक. अच्छा, ये हो गया. अब क्या नहीं, अभी ये जो ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट है ये 75 की बेटा अभी नहीं. जी सर, ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट है, इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ये दिए थे. उस पे अमल हुआ या नहीं हुआ? अब पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है. अब उसका मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा था ये लाइनों पे करो. अब ये तो जिन्होंने चालान देना था, रिपोर्ट देनी थी, विटनेसेस देने थे, उनका काम था ना. ये ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई? हाँ, वहाँ आई ये. तो इनके बयान से कन्फ्रंट नहीं करवाएंगे? नहीं, वो उन्होंने इजाजत नहीं दी क्योंकि बयान तो पता नहीं आया. बहरहाल वो तो बड़ी सर लंबी. अभी मैं तो सिर्फ एक गवाह को टच करूंगा. मैं आपका टाइम बचाऊंगा. देयर आर 41 विटनेसेस. मैं नहीं चाहता फिर बड़ा लंबा हो जाएगा. 41 की नहीं, सिर्फ कंप्लेनेंट की, चूंकि स्टेटमेंट आ गया, वो कन्फ्रंट होना चाहिए था. सर वो आना चाहिए था. वहां कन्फ्रंटेशन को परमिट ही नहीं किया गया. उन्होंने, अब आप देखेंगे वहां पे वो, अब इतनी बातें है ना जी, इतना ज्यादा है मटेरियल कि वो टाइम का इशू आ रहा है आपके पास. अब 41 विटनेसेस है. मैं सिर्फ एक गवाह को फोकस करूंगा, बाकी आई विल नॉट गो टू अदर एविडेंस. सो अब सब हम आ जाएं इस पे. एविडेंस ऑफ मसूद महमूद, PW, ही इज PW2. PW2 सर. ये कौन सा वॉल्यूम है? अभी मैं उसको पढ़ नहीं रहा जी. मैं अभी जरा थोड़ा सा वॉल्यूम नोट कर. वॉल्यूम 2 है. वॉल्यूम 2 है इसका. जरा स्टोरी अधूरी रह जाएगी. ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, because my colleagues don't have the benefit of this report. ये वाला डायरेक्शन वाला 36. हाँ. In short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following: a more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence, that is resident of the area, invitees at the house of Bashir Shah, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation, particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapons used, and the suspect. And the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case, and the suspect to be fully protected against physical harm. मैं पूछना चाहूँ, जो 41 विटनेसेस थे, कार के ऑक्यूपेंट्स थे? कार के ऑक्यूपेंट में स्वाय कसूरी साहब के बाकी कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया. अच्छा, ये दूसरे जो थे इनवाइटीज एट द हाउस ऑफ बशीर शाह? नो. अच्छा, the other thing was the how many shots were fired at the car? Nobody knows, sir. नहीं, कार में उन्होंने कहा छन्नी हो वो गई. काफी उनसे एम्प्टीज ली थी उन्होंने स्पॉट से. नो, आमतौर पे तो केस प्रॉपर्टी बन जाती वो है. बनी ना, ये एम्प्टीज बनी केस प्रॉपर्टी.
कार नहीं कार को तो उसमें कितने, जैसे उन्होंने कहा ना कि there was one entry, अगले दिन इन्होंने स्पुर्दारी पे ले लिया. नहीं उसमें कितने निशान थे? अब ये तो उन्होंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कुछ आया कि वो जो जिसने उसको एग्जामिन किया था उसकी फोटोग्राफ ली थी, वो बात आई. बट सर नहीं मतलब मेरा तो वन शॉट है, ये मौत नहीं काफी है. वो मलिक साहब शायद आप बता चुके हो, शायद मैंने मिस किया हो, एक कंप्लेंट आई है कंप्लेनेंट की तरफ से, तो फिर जो इन्वेस्टिगेट वो एट द टाइम एंड द अकरेंस टुक प्लेस, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रुख मुड़ गया मिस्टर भुट्टो की तरफ. उस दौरान क्या इनकी कोई स्टेटमेंट आ गई चार्जिंग मिस्टर भुट्टो फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर? कहाँ कंप्लेंट में या इस केस में? नहीं, इस केस में कंप्लेनेंट की फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन का रुख जो था वो मिस्टर भुट्टो की तरफ मुड़ गया. ये 77 की बात कर हाँ रहे जी, हैं. तो उस दौरान इनकी कोई हाँ आई है, इनका तो कोर्ट में भी स्टेटमेंट आई है. कोर्ट से पहले नहीं कोर्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेट आई हो. वो कंप्लेंट फाइल की वो बता रहे जब वो कंप्लेंट के बाद करें कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को दी, नहीं वो मेरे इल्म में उस नहीं पर एफआईआर में तो नहीं है ना, वो जिक्र तो है भुट्टो को. उनका केस कोर्ट में भी यही है कि ये उन्होंने पूरा नरेट किया है किस तरह मैंने पार्टी ज्वाइन की, किस तरह मैंने मुखालफत की, क्या क्या ग्राउंड थी मेरी मुखालफत की. मैं उनके फैसले के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान असम्बली का सेशन अटेंड करने चला गया. अगर वापस में फिर वो वापस भी पीपल्स पार्टी चले गए. तो साहब बड़ा कुछ बातें हैं. नहीं, वो चले क्या है, जरा बता दें. बिल्कुल चले गए. इन्होंने टिकट मांगा 77 में, पीपल्स पार्टी का टिकट डिनाइड हुआ. इन्होंने बाहर के मुल्कों में गए, वहाँ बातें की, वहाँ भुट्टो साहब की तारीफ की. ये रिकॉर्ड की बातें आप कहते हैं पढ़ देते. क्रिमिनल कंप्लेंट इनने किस तारीख को फाइल की? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे. वो जो ऑर्डर आपने पढ़ा उसमें लिखा है अगस्त में शायद की है. ऑफ विच ईयर? 77 जब माशाल्लाह लग गया वो. तो फिर आप इनका मेरी सबमिशन ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसके लिए इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. स्टेट ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था नहीं कंप्लेनेंट से ज्यादा. अब चलें जैसे इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. मैं उसको टच ही नहीं करता, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता. चलिए आगे चले. क्योंकि वो बड़ा लंबा है. वो जो बातें मोटी मोटी आपने पूछी हैं कि ही रीजॉइन द पार्टी, he applied for the ticket, he has admitted this fact. He admitted this fact in cross examination. That's applied, but he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. ये इनकी explanation है, but ये fact admitted. But मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जो सबमिट करना चाह रहा हूं कि there was only one witness against Bhutto, one witness, and that is Masood Mahmood. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over. Because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. अब मैं ये देना भी उसकी टेस्टिमनी दे, पेज कौन सा है. अब मैं इसके बड़े ही थोड़े पोर्शन पढ़ूंगा ताकि जनाब का टाइम बच जाए, क्योंकि ये जो क्रॉस एग्जामिन चीफ है. और फिर पहले दूसरी बात ये है कि फर्स्टली आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ ओनली. I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages. But I will read just 10 pages. Ji. And thereafter I will make page volume 2. Volume 2, page And thereafter 64.
Thereafter, sir? आपने कहा and thereafter I will, after reading this. After reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross-examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is कौन सा पेज चले? page 64. Malik Sahab, he was also executed. नहीं, he was a prover, madam, he was a prover. और भी तो उसमें execute हुए. नहीं, अप्रूवर को तो माफी मिलती है तो वो बयान देता है ना जी, उसको तो बस execute हुए हैं approver. नहीं, इस केस में तो कोई अप्रूवर एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अप्रूवर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैम बिकॉज यू हैव टू ग्रांट हिम पार्डन. तो बड़ा मेजर हाँ, चूंकि लॉ को अप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैंने पूछा. हो सकता है बाद में उनको भी कर देते हैं, काम निकालने के बाद उनको भी कर देते हैं. नहीं, वो बड़ा क्लेवर था, उसने दोनों तरफ खेला है. वेरी क्लेवर मैन ही इज. ये मैं कुछ जाती राय नहीं दे रहा, मैं तो उनको देखा भी नहीं. जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेज बताए. करूँ शुरू सर? पेज 64. आपसे पूछ. PW2 Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on SA. SA is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें. मुझे नहीं पता सर. I joined the police service. ये स्किप करें. क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये स्किप नहीं होगा. अच्छा. ये हो आपने चलें फिर पढ़ी. मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ. इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूंगा. एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई, और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का. तो फिर मैं कहूंगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है. प्रूडेंट मैन मानेगा. आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना. अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे. ये इसलिए बड़ा जरूरी है. ये स्किप, ये इसको मैं पढ़ूंगा. I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the police training college in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was additional superintendent of police, West. I served as superintendent of police and later as deputy inspector general. In 1965, I was selected as deputy secretary central with headquarters at Ankara. Before that, I had served as the deputy secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defence, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Waqar Ahmed, the Establishment Secretary, during those days. I was promoted as Additional Secretary and then transferred to a punishment post, that is Managing Director, Board of Trustee of the Group Insurance and Benevolent Funds in the Establishment Division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Waqar Ahmed to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call on Mr. Waqar Ahmed before this interview. Mr. Waqar Ahmed was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me, which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Waqar Ahmed's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at a time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister
and Mr. Waqar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity and capacity to hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into deterrent one. The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmed did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up of an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ. I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ. अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothesmen, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ. Next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmed Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfikar Ali Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mia Abbas, वो जो ऊपर नाम आया ना, already been given directions. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Muhammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा. मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट
की बातें हैं। मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊंगा, सिर्फ 2-3 उसके पैरे पढ़ूंगा। मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूंगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है। दिस इज माई टास्क to get rid of Mr. Ahmed Raza Kasuri. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Mohammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mia Ahmed Raza, Mr. Ahmed Raza Kasuri, or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ये बड़ा important है. I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. यहाँ मैं pause करता हूँ. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience, but against the dictates of God. Now, if your Lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir? मैं तो चाहता था कि मैं जरा डिटेल पढ़ के इस पे बात करूं, मगर अभी अगर आप इसको देख लें, मैं देख ही रहा था। क्या मैं क्या करूं? I can multitask. इससे ये लग रहा है कि जैसे वो एक उसको बता रहे हैं, इन्फॉर्म करना है कि ये मैं तय कर चुका हूँ। और वो आगे मैं बताऊंगा ना कि अगर उसको बताना ही मकसूद था कि काम कर दो, तो conspiracy में नहीं इसको बताने की क्या जरूरत है? कंस्पिरेसी की बेसिक चीज तो सीक्रेसी है कि मैं एक बात दूसरे को नहीं बताना चाहता। ये बताएं कि ये जो अपने मियां मोहम्मद अब्बास साहब थे, इनने कन्फेशन किया था? कन्फेशन किया, रिट्रैक्ट किया। नहीं, उनने जो कन्फेशन किया था उसमें उनने क्या फरमाया? उसमें ने यही फरमाया कि जी हाँ जी ये ठीक है, ये साजिश हुई थी, मुझे इसने भी कहा था। इसने कहा था? महमूद ने भी कहा था, पहले ने भी कहा था, पहले भी नहीं कहा था, मगर वो रिट्रैक्ट कर गया। उसका कन्फेशन हाई कोर्ट ने भी यूज नहीं किया अगेंस्ट भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी वो मैं रिट्रैक्ट गलत किया था, मैं सही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। दिस आई एम रेफरिंग फ्रॉम मेजॉरिटी जजमेंट, his statement was not considered. My question is, I am stopping here, just what was my purpose to involve this man? अब आगे पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas, so it could be conveyed to somebody else. It could directly be called by the Prime Minister. तो भी क्या किया? अब आगे देखेंगे तो और बातें आएंगी. पढ़ूं सर फर्दर. आगे जी. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Mohammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, "You don't want Bukhar chasing you again, do you?" I returned to my office in that perplexed state of mind. अब ये बड़ा important है कि the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said yes sir. हुक्म की तामील होगी जो हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर इवन जुडिशरी में हर जगह करते हैं. उसने ये नहीं कहा. उसने कहा नो सर, आई कांट डू दिस. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. ये वकार अहमद कौन थे? Waqar Ahmed establishment secretary थे, but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं behind his back. पता नहीं कि सारे ही करते हैं behind बैक पे ही तो बातें होती हैं, फ्रंट पे तो बहुत नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है टेस्टिमनी.
हाँ ये सही है बात। नहीं भाई, if he is attributing things, Sir, he वो- should have been summoned. मैं फिर रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तो टाइम कॉन्शियस हूँ, इतना इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है, इतने इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट हैं, ना कि फैक्ट्स के बल्कि लॉ के। मैं तो चाहता हूँ सुने इसको, ये अभी तो मैं इधर रुका हूँ ना, कि सिर्फ इससे ही देख लें कि क्या इसकी जरूरत थी बुलाने की। अब आगे बड़ी मजेदार बातें आएंगी, अभी आप इसको देखिए। बड़ा ये अब एक स्टेज पे ये बिल्कुल मोमेंट बनेगा, ये कहेगा कि आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। अब अनफ्लिंचिंग फेथ जिस बंदे का अल्लाह के पास, अल्लाह में है, तो क्या वो बदलता रहता है? जी 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 ठीक, कंटिन्यू करो। जी 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 जी। अच्छा Whenever you're tired, we'll stop. सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अभी मेरा इसमें डेढ़ दो नहीं नहीं, आप घंटे- चलें चलें चलें। आपका कितना टाइम हो? सर अभी कोई घंटा डेढ़ और लगेगा, ज्यादा लग जाएगा तो इसमें, क्योंकि बड़ी सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस है। आप बताएं बताएं, 1.5 घंटा लगेगा। बताएं, कंटिन्यू। हाँ टाइम लगेगा सर इसमें। घंटा लान के मुखर जो अच्छा ठीक। खत्म करेंगे तो गलती करना ऐसा कह रहे हैं। जी चलें, थोड़ा लेट्स एक की विटनेस तो खत्म करें। ये तो नहीं खत्म होनी सर। चलें चलें, हाँ? अगर हाँ, इसका चीज खत्म हो जाएगा। चलें लेट्स सी हाँ चीज खत्म हो जाता है। ये अगर घंटा आप कह रहे हैं तो मेरे साथ 2 घंटे कह रहे हैं। मैंने कहा था कि 2 घंटे के तहत पूरा इसको एग्जामिन नहीं करना है। देखिए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट टाइम, बट लेट्स मेक सम प्रोग्रेस। अभी तो टाइम है थोड़ा। मुझे कोई इतराज नहीं, इसको पढ़ लेते Yes, हैं, you're tired चीज of पढ़ लेते हैं फिर बात करें। ठीक, ठीक। चीज पढ़ लेते हैं ताकि वो फिर बाकी बातें बड़ी लंबी हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। ये सर अब आगे आ गया मियां अब्बास। आई रिपीटेड टू हिम द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर वर्बेटम। ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज नॉट गिविंग हिम डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं कि मुझे फलां ने ये कहा है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां अब्बास को कहते हैं कत्ल करो, फिर इसको बुला के कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब- कहते हैं, मैं बताता हूँ प्राइम वो मिनिस्टर। तो दुनिया भर को बता रहे हैं नहीं सर। सर नहीं क्या मतलब है? सर, अब मुझे तो मतलब नहीं पता, ये तो केस है आपके सामने, मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर कसूरी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा, और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइंड टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर। ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे। आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो मैं नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वांट टू दैट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू। अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता। ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूं, उसको मैंने बुलाया, मैंने वर्बेटम रिपीट कर दी, एंड दैट्स ऑल। अपने तौर से कुछ नहीं कहा। वो तो आगे आएगा ना, जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी, बाकी फिर देख लेंगे। वो कहता है नहीं, मेरा एक जो देखें, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे। नहीं सर, नहीं बहुत फायदा है सर, प्लीज। चलिए फिर पढ़ते हैं। देखिए मैं पता नहीं, मैं नहीं, मगर सर, मुझे सर, देखिए, नहीं, मुझे देखिए, पता है, सर, a person- मेरी एक रिक्वेस्ट। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने why I've made this comment. A person becomes party to an illegal act for joint benefit, mutual benefit. That could be one thing. Or to aspire to an office, that could be another thing. But he's already got the office. मैं अर्ज करूं? Or he can decline the office. There's nothing blackmailing. अगर- कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे? सर, एक सेकंड। नौकरी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं गुजारिश करूं लूज आउट। सर, मैं गुजारिश करता हूँ, अब ये फैसला करना है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं, कह रहे हैं वकार अहमद तुम विल बी वेरी। सर वो देखें, मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है। नहीं, चले चले करें। मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए। चले चले करें। मेरा टारगेट ये है, मेरा पर्पस ये है। ठीक ठीक। हाँ, ये मेरा मकसद है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नथिंग सर, मैं आई एम एट योर डिस्पोजल। आगे जी सुनिए। आई रिटर्न टू माई ऑफिस इन दिस परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड एंड कॉल्ड मियां अब्बास।
I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. I was surprised to find that Mia Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed, because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once. Mia Muhammad Abbas was Director Operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmed and through his assistant Bajwa. कैसी interesting बात है. बाजवा भी आ गए, बाजवा भी आ गया, सईद भी आ गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और फिर भी साहब ने दोबारा अगर को रिमाइंड कर रहे हैं प्लीज कर दो, कर दो, और वो एक्सेस पे नहीं है ना. आपने एक काम जिससे करवाना वो तो बाहर बैठा हुआ है और बाहर राब्ता ही नहीं का है, वो उधर ही है, उसको बुला लेते. अब आगे देखिए सर. In August 1974, Mr. Ahmed Raza Kasuri was sniped at in Islamabad. Before the Islamabad incident and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmed Raza Kasuri, who was likely to be Quetta. अब ये क्वेटा का इंसिडेंट है क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं. क्वेटा में शायद अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात फिर इसका तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है. अब मैं आप सही समझे. हैं जी, आप सही समझे. अच्छा किसके बारे में? क्वेटा के बारे में. अब पेज 74 पे जनाब. On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, "Your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmed Raza Kasuri, he has got his father killed." I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है, तो उसने कहा कि मियां अब्बास ने ये क्या किया. आगे कहते हैं, the Prime Minister hung up after telling me that he would summon me later. His ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan, where I was ushered into the presence of Mr. Bhutto, who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him. Most nonchalantly, Mr. Bhutto said to me, as if he has not talked with me before, "I heard Mr. Ahmed Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in Lahore." I replied that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Abbas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, "This is very important, sir. Kindly look at a man." He said to me, "At your behest," I said to him, "At your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore." ये इनके प्रीडिसेसर कौन थे? वाना साहब थे जी कोई, वो पेश हुए वो फौत हो गए थे. नहीं, इसमें मेरे ख्याल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से दौरान या पहले फौत हो चुके थे, वो रिकॉर्ड पे आ गया. अब देखिए बंदे का किरदार कैसा है. एक तरफ कहता है जी सुन के तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मगर मैंने कन्वे कर दिया. दूसरी तरफ कहता कि नहीं. अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अगला जी वो असली बात आपने नहीं पढ़ी. वो पढ़ देता हूँ जनाब, पढ़ दीजिए. पढ़ देता. My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmed Raza Kasuri's father were great friends. I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore.
We, the two families, had excellent relation. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmad Khan or Mr. Ahmad Raza Kasuri or any member of that family never existed. نہیں اگر ان بات مان لیتے ہیں دوستی تھی تو بنیادی فرض تھا دوست کا کہ جا کے فوراً اطلاع دیتا کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یہاں سے غائب ہو جاؤ، چھپ جاؤ، کچھ کر لو، جان بچا لو. یہ تو کہنے میں بہت دوست تھا ان کا. میں تو ابھی تبصرہ کر نہیں رہا، میں تو نہیں میں سوچ رہا ہوں یا تو کہ میں دوست نہیں تھا. بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. اور یہ بات چلیں پرائم منسٹر کو نہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست کو تو بچا سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو پہلی میٹنگ میں کہہ دیتے کہ جناب یہ کسی اور، ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو چنا ہی نہیں جا سکتا اس ٹاسک کے لیے. پریزیڈنٹ کے پاس چوائس کیا تھا، کس کس کو وہ رکھ سکتا تھا، وہ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں میرے خیال میں کل بتاؤں گا. Although at the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped down after hearing me there, and were other occasion on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmad Raza Kasuri's assassination. Categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from Aitchison College, Lahore. There were repeat performance of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some my own subordinates seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been. When I آگے یہ کہتا ہے جی میں کسٹڈی میں لیا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، میں نے بیان دیا، وہ ریلیونٹ نہیں. اب صاحب اس میں میں کل پھر ڈیٹیل سبمیشن کر دیتا ہوں سارے ایشو پہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. کیونکہ اب اس کو بہت ہی یہ امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے، اب اس کا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں اس بیان پہ سزا ہوئی ہے تو اور کس بیان پہ؟ اور تو ایویڈنس ہے سر، دوسری ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ تو ساری کروبریٹو ہے یا سپورٹنگ ہے. کروبریٹو نہیں ہے، سپورٹنگ ایویڈنس ہے، کروبریٹو نہیں ہے. اور تو اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں، کوئی مان ہی لے. میں کیا کہہ سکتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ امائکس ہیں نا، 4 لوگ تو مان چکے ہیں. آپ امائکس ہیں نا، اس لیے آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں. یہ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، کوئی بھی سینسیبل بندہ، کوئی بھی لا نوئنگ بندہ، کوئی بھی ریزنیبل بندہ یہ نہیں مانے گا. سپریم کورٹ نے مان لیا. نہیں میاں عباس، اب میں سپریم کورٹ ہوں، پچھلے سپریم کورٹ کی بات. میاں عباس کا جو 164 کا بیان ہے اس میں اس نے بھٹو کے بارے میں کچھ نہیں کہا. نہیں، اس نے تو کہا کہ مجھے اس کے ذریعے ڈائریکشن، وہ تو اس کو تو مانا ہی نہیں گیا نا جی، اس کو تو نکال دینا. فرض کریں اگر مان لے اس کو، فرض کریں مانا ہی نہیں گیا، فرض کرنے فار دا ٹائم بینگ مان بھی لے. نہیں اس نے نہیں یہ باتیں کی. اس کا کوئی اس کا بیان، کیونکہ جب کورٹ میں وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا، وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا. وہ اکیوز ہے نا، اکیوز ہو گیا نا. 164 تو کا میں بیان کیوں کیا نہیں؟ ہے، اس نے یہ نہیں کہا. اس 164 کا اس نے بیان کہا کہ مجھے ٹوانے نے کہا تھا، ٹوانے نے کہا تھا. کیا اس کا سٹیٹمنٹ، کیا وہ میجسٹریٹ جس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی اس کو پروڈیوس کیا تھا؟ ہاں کیا. تو پھر اس کی کنفیشن ویدر وہ ریکارڈ پہ تو آیا نا، اس کی اپنی حد تک جائے گا نا کہ اس کے بیان کو ہائی کورٹ نے ریلائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ ریزائل کر گیا اس سے. پھر وٹنس باکس میں بھی نہیں آیا نا. نا پھر کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا جب وٹنس باکس میں نہیں آیا تو 164 کی نہیں ہو سکتا. نہیں وہ دیکھیں کدھر ہے اسٹیٹمنٹ اس کا؟ کون سا؟ دوسرے میاں عباس. سر اس کا 342 کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ادروائز اگر وہ 342 پڑھا جائے گا نا. اگر وہ ملک صاحب اگر وہ 164 کو آپ فار دا ٹائم بینگ ایکسپٹ کر لیں اس کو، اس میں کیا کہا بات کی؟ سر اس نے 164 کو اگر ایکسپٹ کریں گے تو اس نے ٹوانے کا ذکر کیا کہ مجھے ٹوانے نے کہا. ٹوانا تو آیا نہیں، ٹوانا تو فوت ہو گیا نا. اس کا ذکر کیا اس شخص کا، یہ محمود؟ ہاں کیا اس نے، تو کیا
164 में तो किया। फिर उधर वो उसने देखिए ये बेसिकली जो चीज आई वो वहां आई और ये सपोर्टिव है। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एविडेंस आप तब मानेंगे कि इफ ही इज ए विटनेस। मलिक साहब इस तरह कर लें, कल कर लें, सर मैं गड़बड़ ना सर हो। जवाब दे लूं सर। नहीं थक गए सर। नहीं मैं जरा क्लियर कर लूं, वो सपोर्टिंग नहीं है, वो तो मानी नहीं किसी ने। एक शख्स एक अक्यूज कन्फेशन कर ले, बाद में रिजाइल कर ले, वो नहीं माना। आप उसके कन्फेशन को कंसिडर बिल्कुल नहीं सर, करेंगे। अगर तो वो मुल्जम को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है, उसको दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाँ जी, जजमेंट में settle लिखा, मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुल्जम का है वो उसके लिए है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं है। सही। या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते, मियाँ अब्बास को भी अप्रूवर बना लेते ना, फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते। दूसरे के लिए वो सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है ना सर, बिल्कुल हो उसके सकता खिलाफ। है, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको सजा दे उस पे उसके ऊपर। आप सिर्फ इतना बता दें, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर रिलाई नहीं किया, उसको डिसबिलीव किया है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना Retracted. रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं पढ़ किया। लीजिएगा, वो पैरा निकाल बिल्कुल, लीजिएगा, वो निकाल ठीक है ना, वो जो जिन्होंने बिल्कुल, कन्फेशन किए हैं। उस पे स्टेट ने अपील नहीं की। नहीं, कोई अपील नहीं की, उसकी क्या अपील करनी, स्टेट का तो काम हो गया। स्टेट का तो काम हो गया ना जी। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो पोजीशन जो है ना उसका कन्फेशन उसके लिए है, उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली। आई एम एड्रेसिंग जस्टिस याहिया साहब, उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली, दूसरी एविडेंस पे मिली है। बस ये देखना है कि क्या उसके बयान को 164 के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, 164 का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। मैं कल दिखा दूंगा आपको। ठीक है सर। अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये 164 सही है, ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं, मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की ओर रिलाई करते हैं, ये नहीं है, उसको भी सजा उस पर नहीं हुई। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था, मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम आपको मानते ही नहीं। उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के, हाँ, नाम मानने के हाँ, endorse। वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको। इसमें लिखिए लर्नेड माइकस जस्टिस मंजूर मलिक commenced his submissions assisted by लिखे या ना ये सर बिल्कुल, ये इन तीन बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी। एक तो नाम बताइए, कोर्ट का नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे। नाम लिखा ये अंसर नवाज मिर्जा, नहीं हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है, assist by so and so. It is now 4 p.m. 4 p.m. Full stop. During his submissions, it was noted that there was also a complaint case before the High Court, but the learned amicus stated that filed by the complainant, namely Mr. Kasuri, but the learned amicus stated that he has not been able to locate a copy of the said complaint. Full stop. Mr. Kasuri, the complainant is in court, and in case he wants, and if he has a copy of the said complaint, he should file the same. ठीक है, इनके पास होगी ना? पता नहीं जी, पता नहीं। आप अगर आपका साहब फाइल कर दीजिएगा। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपका साहब फाइल कर दीजिएगा, आपको भी सुनेंगे। जी। Since the very prominent judges of this country who have died, they are, it seems that they are on trial. I think notices should be given because somebody should protect their image and their reputation, because a lot is being said about them. They have died, but their successors should be given notice by this court. But let us correct that they are certainly not on trial. We are dealing as per our duty under the Constitution, attending to a presidential reference. These proceedings are broadcast live. These proceedings are well reported in the media. If anyone wants to come forward
They can do So, so. No, please ठहर जाइए. they may Now not you come- said something. Now have the They may not grace. come on their own, So let but them not. if you formally invite them Kazuri before sahab, this now you honorable said court, something. and I'm I think responding. they were very prominent judges. You see, आप सुनना when नहीं चाहते हैं, all of us वो must आना be चाहेंगे, आ जाएंगे, जो भी when आना all of चाहेगा. us be in our 20s. At that time, they were the judges of this superior court. dealing with law. And they are being discussed very negatively. So therefore, I personally feel that notices should be given to the Okay, fine. the relatives, their अगर families. सूरी साहब अगर आप समझते हैं कि कोई अगेंस्ट द रिकॉर्ड और नेगेटिवली कुछ कहा जा रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आप उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए. It's not my So the court meets this afternoon to hear Kuwait, Lebanon, Libya, Luxembourg, Malaysia, and Mauritius on the questions submitted to it by the United Nations General Assembly. Let me one more time recall that each delegation is kindly asked to respect the 30-minute time allocation for its presentation. This afternoon, the court will observe a short break after the presentation of Libya. I shall now give the floor to the representative of Kuwait, His Excellency Mr. Ali Ahmad Brahim Al-Dafriri. You have the floor, Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, honorable members of the court, it is a great honor to appear before you as the agent of the state of Kuwait in these proceedings. Kuwait deeply appreciates the extraordinary effort taken by the court to allow this hearing to proceed smoothly in light of the great number of participants. The current advisory proceedings are of extreme importance to the Palestinian people, Kuwait, the international legal order, and the international community as a whole. Kuwait has always advocated that peace fosters the observance of law and vice versa. Adherence to the United Nations Charter is an indispensable prerequisite for the definitive establishment of international peace. Indeed, peaceful relations are founded on accepted rules, and as such, peaceful relations among states are based on the provisions of the United Nations Charter. These include, notably, the principle of non-use of force and the peaceful settlement of disputes. These rules apply to all states. Respect for these fundamental rules contribute to the consolidation of international peace. Regrettably, the above-mentioned foundational rules have not been upheld in the case of Palestine. The conflict between the Palestinian and Israel, hereafter referred to as the occupying power, is an illegal occupation conflict involving, on one side, an occupying power equipped with all military means, and the other side, an occupied nation without defensive capabilities, facing daily expulsion, human rights violation, and all sufferings associated with any occupation situation. Over the past decades, the situation between the Palestinians and the occupying power
has been extremely tense, resulting in a serious human rights law and humanitarian law violation committed by the latter. Various intergovernmental and non-governmental organizations have documented these violations by publishing comprehensive reports. This climate of violence compromises any possibility of reasonably discussing the issue at stake. This is further exacerbated by the recent development in Gaza. The occupying power has waged an illegitimate war on the Palestinians in Gaza, characterized by numerous international law violations. The ongoing flagrant violations have been highlighted in a series of statements issued, among others, by the UN Secretary General, the UN High Commissioner for Human Rights, and the special procedures of the UN Human Rights Council. The unprecedented violence in Gaza is a result of 57 years of illegal occupation of the Palestinian territories, and it must stop. The late Emir of the State of Kuwait His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Sabah, Mr. President, summarized the situation in 2018 by stating, we asked the whole world by stating, quote, Mr. President. Quote, why do we ignore and do not implement Security Council resolutions? Why? We ask the whole world why the Palestinian people plight continues. Why the international community incapable of resolving this cause? Why does the victims continue to be portrayed Why does the victim continue to be portrayed as a killer according to Israel's norms? Why does Israel always escape punishment? Why have all these souls been lost amid absence of world conscience? Unquote. Sorry, Mr. President. Sorry. Mr. President, distinguished members of the court, it is in this context that Kuwait appears